उनको कैंडलस्टिक क्या है, आई थिंक दे नो वेरी वेल व्हाट इज कैंडलस्टिक्स, what is opening, what is closing, what is high and what is low. Yes, chalo, done. Okay, so today we will learn some patterns of the candlestick. Okay, we will combine one or two candlesticks or two to three candlesticks together to get a candlestick pattern. Okay, so what's the use of this pattern? ये pattern का जरूरत कहाँ पड़ेगा अपने को? Okay, we will be using it entry and exit, entry and exit. We will be using this candlestick patterns to have a proper entry and proper exit. And एक second guys. Yes, so where I was, yes, कैंडलस्टिक की पैटर्न की जरूरत क्यों है हमको? क्योंकि नो द प्राइस बिहेवियर एंड द वी कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट, वो ऊपर जाएगा, वेदर इट विल गो अप और वेदर इट विल गो डाउन. सो वी हैव सम पैटर्न्स फ्रॉम 3 to 4 पैटर्न्स. आई विल टीच यू दैट. सो ध्यान से सुनना ये वाली क्लास. सो काफी इंटरेक्शन होने वाला है ये क्लास में. सो आई विल डिलीट ऑल दिस. सो एट फर्स्ट वी विल हैव फर्स्ट वन, मॉर्निंग स्टार पैटर्न. ओके, एंड एक एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे, किस किस को पूरे कैंडलस्टिक के बारे में पता है? प्लीज लेट मी नो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ पे जिनको आता है और जिनको नहीं आता है. ओके, तो थोड़े को पता है, थोड़े को नहीं पता है. ओके, अभी मैं समझा रहा हूँ, एक बार वापस आप सुन लेना, साइकोलॉजी पढ़ लेना कैंडलस्टिक, ठीक है? सो गाइस, यस, सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन. एंड प्राइस एक्शन, व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन मीन्स वॉट एवर द एक्शन द प्राइस इज टेकिंग is known as price action. The history repeat will itself. Okay, history हमेशा अपने आप को दोहराती है. इसका मतलब जो भी प्राइस में previously हुआ था, whatever happened in the price previously, it will again gonna repeat the same thing in the future. So according to that, we will have some patterns and some terminologies in which we can predict the next price movement. Okay, it's not 100% sure. Nothing is 100% sure in the market. There is only probability through we will be winning in the market. Yes. Okay, I am missing N, I think. Yeah, yes, N. So what is morning star pattern? Okay, so first important thing I will let you know कि morning star pattern is combining of three candles. Okay, three candles. Okay, so इसको पढ़ने से पहले you have to know the doji candle or a pin bar candle. Let me show you. एक सेकेंड. I will show you here. So first, guys, we will have a red candle. Yes, this is the red candle. And then we will have red or green candle. Whether दोनों matter नहीं करता कौन सा color है. Red चलेगा तो भी ठीक है, red green रहेगा तो भी okay. Okay, whether it is red or I will use black to denote both the colors. Okay, is it clear? So I will use it black. A candle like this. One second, I will make it clear. Yes. And then a green bullish candle. This one. So this combination of three candles is the morning star. How you will denote this? How you will identify it's a morning star? So guys, simple way to identify this as a morning star is the price is taking a U-turn. Yes, it's taking a U-turn. Like price, red means what? Red means price gir rahi hai, right? If the price is falling and it's getting reversed like this. So the sun is rising. Sun is rising. So it's a morning star. Sunrise हो रहा है मतलब it's in the morning, right? So we will call this as a morning star. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Price has came down from समझो 100 to 95, and again from 95 it went to 90 also, then again it came to 95, then it went to 100. So it is a U-turn in the price. We will denote this as a
reversal pattern. Exactly, Amrit. This is a reversal from bearish to bullish. लेकिन you will not only trade on the अगर सिर्फ मॉर्निंग स्टार देख के ट्रेड करोगे क्या? if you find the morning star in the chart patterns, will you trade? Yes or no? Of course no. With the only seeing the candlestick patterns, you will not trade because the conviction is very less. The confidence will be very less in the this type of patterns. But we need some more confirmation. Yes, Hiren, you are absolutely right. We will find it on support. Okay guys, so किस किसने मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा यूट्यूब पे? आई हैव शेयर्ड सम वीडियो ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो कौन किस किसने देखा है? ओके बहुत लोगों ने नहीं देखा है. सो एक काम करते गाइस, आई विल शेयर यू द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप. एक बार वो पूरा देख लो क्लास खत्म होने के बाद कि हाउ टू फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है. अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, क्या हुआ भाई? Do you guys able to see my whiteboard? Please let me know. Okay, now it's clear. Okay, trading व्यू दिख रहा है क्या? एक सेकंड वापस लगाता हूँ. Okay, now I think now you can see. Again trading view. Okay, wait. Now अभी दिख रहा है? चलो डन. Okay, so I think issue हो गया था. Now it's solved. So what I was discussing. एक second. Just 1 second. Yes, morning star. So write these points, whatever I'm writing. We should have at least 3 candles. And it should be on support line. Okay, so these are the important things. Only दो ही चीज important है यहाँ पे कि ये support पे रहना चाहिए. Suppose okay, this is the price going. Okay, I will write it clearly. This is the price channel. ठीक है, price is moving in this way. ठीक है. Now see me carefully guys, what I am doing. एक काम करता हूँ मैं, पूरा एकदम fresh बनाता हूँ. Did you guys noted these 2 points? Let me know. Chalo, I am deleting this. Yes, so this is the price channel. The price is going like this. Now it's very important part. So this is the red candles, right? If the price is going down, what we can see? We can see red candles are falling. Yes. And the next candle will be like this. And the next one will be green. Yes, what is this line, guys? This is support, right? Of course, support. And those who guys don't know support resistance, I will share you the link. Just watch. Of course, you guys are late here, so एक बार link मिल जाएगी. You will have an idea what is support and what is resistance.
एक सिंपल सा अभी बता देता हूँ कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. इफ द प्राइस इज फॉलिंग, the one trend line will give the price support like this. It's going up, right? The price is moving up, so it's providing a support. Yes, this is the support. So of course same thing will repeat at this point. So there is a support. First confirmation is there is a support. Second confirmation is there is a bearish to bullish reversal. Yes, reversal. So these three candles is a morning star pattern where we will buy wait, I will just remove this. Yes. So where will be our entry and exit? Okay. This will be our entry at the high of this candle. जब ये high तोड़ देगा ना इसका, at this doji candle जो भी है black वाली, after breaking this high and the candle closes above this high, we will take entry here. And stop loss कहाँ होगा? ये जो candle का wick. Guys, do you know what is wick? I have shared, right? Wick and shadows, everything. So yes, this will be the stop loss. I will write in red. Wait. Yes. So this line will be our stop loss. Nikhil, please, I'm explaining, right? Yes. So this will be our entry. Why we are taking entry here? Because the price is in a channel and we can see a morning star channel ban raha hai, morning star ban raha hai, and the morning star is at the support. अगर morning star यहाँ पे कहीं मिलता तो what you will do? यहाँ पे अगर दिखता, so will you take the trade? No, the trade will very risky. Of course, the price will again, it got rejected from here, right? So the again price will fall down to get the support. And without getting any support, if you find the morning star, there are more chances कि आपका stop loss ज़्यादा hit होगा. So इसीलिए be patient, wait for the candlestick patterns to form. Here we got a very good morning star pattern, so we are entering. Stop loss यहाँ पे छोटा है. Target कहाँ का होगा? Where what should be my target? This point, right? This point is my target. So okay, so now what will happen? Wait, you have buyed here. Now the candlestick pattern will try to move up. Now it's at the resistance. अब यहाँ पे which candlestick pattern we need to form? We need to, for confirmation, to short sell the market, to short sell the coin. Which candlestick pattern is needed? Evening star. Yes, I will. Wait, guys. I will let you know. What is evening star? Wait a minute. I will delete this. So okay, first candlestick pattern is done. Now heading towards the second candlestick patterns. Evening star. यहाँ पे क्या चाहिए हमको? Same 3 candles should be at support or resistance. Of course, resistance. Sir, entry will be Doge high or green high. I didn't got you actually. Okay, जब ये कैंडल क्लोजिंग होता है ना, थर्ड कैंडल का प्रिंस, whenever the closing of the third candle will be our entry, and the candle should close above the doji coin. Okay, yes, doji candle, sorry, not coin. So okay, what is evening star? So guys, of course, in morning we learned the sun is rising. Okay, there is a reversal from bearish to bullish, so the evening star will be opposite. Okay, so now here the price will go from bullish to bearish. Okay, this is an inverted like V turn, inverted V turn मैं बोलूँगा इसको. So let's try to understand this in the candlestick patterns, what's happening. Yes, so of course there is a trend, bullish trend. ठीक है, bullish trend चल रहा है. Yes, yes, of course I will teach you on the real chart, please be patient के साथ. So यहाँ पे there is a bullish trend. This is a bull जाओ इसको एक second. Bull. This is a green candle. This is either red or either green candle. और चलो थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं इसको, no issues. We can take this also.
now red candle. So these three candles will form an evening star. अब यहाँ पे प्राइसिंग भी समझ देता हूँ. This is the 100 प्राइस, यहाँ पे 100 है, and the price goes up to 105, and in this candle the price made a high of 110. Again it came back to 105. It fell down to again 100. So it is a reversal from the price. No, there is no specifications कि wick लंबी हो या छोटी हो. Make sure the wick should be above this line. एक सेकेंड. यस, ये दो विक होगी ना, उसके ऊपर ही आना चाहिए ये विक. ओके, क्लियर? Yes. So this is a reversal in the candlestick pattern. So I will show you in the form of a channel, price channel. Okay. This is the channel. The price is going. What we saw here we saw morning star. Yes. Now here we are planning to see a evening star pattern. No, it's not invalid. If you see the wicks are above that, then it's good to trade. Okay, you will get more conviction. You will not see exact these kind of patterns in the market, but we have to understand. How you will understand? जितना practice करोगे charts, उतना ही आपको समझ में आएगा. I will also giving you homework after this class. You have to find this candlestick patterns and submit me. I will give you. Please be patient and don't ask doubts in the middle of the class. Please, it's disturbing me. Okay, एक बार class खत्म हो जाए, then I will try to solve everyone's doubt. Please, okay, cooperate. Thank you so much. So this is a green candles. Clearly करते हैं. Now you will see a black. Now red. Okay, so here you saw a evening star pattern at the resistance. So what you will do here? You will buy or you will short. You will go long or you will go short. Yes, short. So where will be our entry? We will same entry, same criteria. ये जो भी इसका हाई होगा, this doji candle यहाँ पे, अगर वो तोड़ के ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए, this will be our entry. Stop loss क्या होगा? This candle high of this candle, SL. Target will be again this level. Yes, target. यहाँ पे why we are taking entry? Can anyone say me? How many good criteria are there? Please write in the chat box. एक ही लाइन में लिखना जितने भी क्राइटेरिया से. पैटर्न, ओके, वन ऑफ द रीजन. पैटर्न एक रीजन है. रेसिस्टेंस, ओके, सेकंड रीजन है. रेसिस्टेंस एंड पैटर्न, रेंज, ओके. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूल रहे हो ट्रेडिंग का यहाँ पे. वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इसमें कोई दिख रहा नहीं है हमको. पैटर्न साइकिल, ओके, वन ऑफ द रीजन. प्रसाद, नथिंग, ओके. रेंज ट्रेडिंग, बाय सपोर्ट, नहीं, स्ट्रॉन्ग आप चीज भूल रहे हो यहाँ पे. पावर एंट्री, नो. प्राइस एक्शन, ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन ही चल रहा है. आरएसआई तो यहाँ पे है ही नहीं ना. स्मॉल एसएल, यस. this is what I am expecting from you guys, कि यहाँ पे you have very good risk reward ratio. Okay, you are risking only this much part you are risking, but your target is this big target. So the risk reward ratio is very good in the trade. So yes, we can enter the trade because we are getting what? First, the candlestick confirmation, yes. Bearish candle, yes. Okay, and it's at the resistance, yes. Third, I think it's third, yes. Fourth important part is the risk reward ratio. What is risk reward ratio? Don't worry, I will cover this also. So please be in the classes and make sure you attend the classes regularly. So risk reward ratio be complete करेंगे अपन. So yes, these are the main topics and these are the main confirmations to enter the trade. Risk reward ratio is important. First, only you have to calculate your loss. Don't think about profits. मैं सुबह जब भी ट्रेड देता हूँ ना, I will only calculate my loss.
अगर मुझे लॉस कम दिख रहा है ये ट्रेड में एंड कन्विक्शन ज्यादा है प्राइस एंड कॉन्फिडेंस ज्यादा, देन ओनली आई टेक द ट्रेड गाइस, अदरवाइज आई डोंट टेक द ट्रेड. I need proper risk reward ratio, then only it's good for me to trade. Okay, so ये candlestick हो गया. दूसरा जो है, that's also you can see, the third one is engulfing patterns. There are two type of engulfing patterns. Of course, bullish. Okay, I will explain you this in short. Yes, you will get the recording of the class, but strategy की जो classes होगी उसमें I will not provide any recording. You have to attend that. Okay, don't. I will update you when is the strategy sessions. Then only you can attend the classes. Yes. So what is bullish engulfing? Suppose this is a support. Okay, support, and here it's a resistance. Wait a minute. Yes, here it's a resistance. So in this point, the price is of course the falling. Yes, support पे आ रही है price. It came to support, and the next candle is very important here. What's this candle? This is, you can see this green candle is totally engulfing this full candle. Yes, so this full candle is under the candle of the green. देखो ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये रेड कैंडल आ रही है, पूरा एनगल्फ कर लिया. मतलब एनगल्फिंग मतलब लाइक ईट पूरा खा लिया है कैंडल को. ओके, सो दिस रेड कैंडल हैज, दिस ग्रीन कैंडल हैज एनगल्फ्ड द फुल रेड कैंडल. इसका मतलब क्या? yes, it's fully covered. Yeah, yes, Hiren, right. So the candlestick is fully covered by the green candle and it has engulfed. So this is a strong bullish signal. Okay, strong bullish signal. Okay, यहाँ पे क्या होगा? SIGN. Yes. So यहाँ पे एंट्री कैसे होगा हमारा? Of course, this will be our entry. Same criteria होगा एंट्री का. And जो भी ये wick बनाएगा ना, whatever the wick is there, and the short, the low of the wick will be our stop loss. Okay, can you show it again, sir? Yes, of course, Amrit. Adarsh, you can see there, this is a support, right? This is a support line. ये जो एक support line है, this is a support line, and the price is reaching near the support. And at the support, if you find this bullish engulfing candle, like it's engulfing this red candle, okay, so this is a strong bullish reversal signal. So you have to take entry at the high of the candle. अगर closing में you have like 10 seconds left in the closing and the price is at the high, then only you can enter. And the stop loss will be low of the week. और 20 EMA है तो अच्छा, 20 EMA I think ऊपर रहेगा. So EMA छोड़ दो. The stop loss क्या होगा? ये week के नीचे होगा. And same opposite side in the bearish engulfing. So यहाँ पे the price is moving up. And the next candle will be, of course, bearish candle. So you can also see opposite हो रहा है guys. Same thing का opposite यहाँ पे देखने मिलेगा. So the price is moving up, and you can see there is a red candle, and it has engulfed the full previous green candle. इसका मतलब the resistance is respected. The resistance is not allowing the price to move more up. Okay, here the sellers are sitting. Sellers बैठे resistance पे कि जैसे प्राइस यहाँ तक आएगी हम शॉर्ट करेंगे, हम सेल करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि प्राइस नीचे जाए. और सो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुआ है रेड कैंडल में, या फिर यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे थे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है. सो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा. अब जो लोग सिर्फ आप ही देख रहे हो क्या रेजिस्टेंस? नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं. तो जब ये कैंडल दिखेगी यहाँ पे बहुत सारे लोग आके शॉर्ट सेल करेंगे. तो अगर बहुत सारे लोग आए हैं शॉर्ट सेल करने, द प्राइस विल मूव डाउन, यू विल गेट प्रॉफिट. स्टॉप लॉस सेम चीज, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे अपना 1:2 का टारगेट, या फिर द नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ पे भी होगा वहां तक का अपना टारगेट. एंड सेम चीज यहाँ पे भी. यहाँ पे देखो बहुत लोग शॉर्ट करे होंगे, द मेनी पीपल हैव शॉर्टेड हियर.
and the price is reaching down, and at support the new buyers are waiting to buy at the lower price. Okay, the price is getting lower, right? So new buyers will come here, jump here at this candle, and those who shorted the market will see this candle, अरे बाप रे यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, just let's book the profits. So यहाँ पे जो short sellers थे, they are booking the profits. अब जब profit booking हो रहा है, नए buyers आ रहे हैं, and support भी है, then price will start to move up. Okay, it's green. Yes, now the price will move up. This is how the psychology of the price moves. ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था मार्केट, आई शॉर्टेड हियर एट 100 रुपीज, नाउ प्राइस इज एट 80, आई एम गेटिंग 20 रुपीज प्रॉफिट, एंड सपोज द आदर्श इज देयर इन अवर ग्रुप, नाउ आदर्श वांट टू बाय दिस कॉइन एट 80 रुपीज, सो ही विल सी दिस कैंडल, okay, so he thinks yes, I will buy at this point, 80 is very good price, so now the price will go move up. Okay, I booked the profit at this candle and others buy it at this candle, so the price will move up. So this is how price movement will come in the market. So you have to see where these candlestick patterns are forming. Guys, can you guys see here, can you guys also see here evening star? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या morning star? Of course यहाँ पे नहीं है, but can it form here? यहाँ पे बन सकती है evening star at this point? Yes or no? यहाँ पे बन सकती है? Of course बन सकती है, because it's resistance. Same logic होगा, यहाँ पे evening star देखेंगे, जो भी लास्ट डोजी या प्रीवियस कैंडल है उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, उसका हाई, एंड टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट, एंड यहाँ पे वी कैन ऑल्सो फाइंड अ मॉर्निंग स्टार. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इन द चार्ट. यहाँ पे देखते हैं, चलो क्या है, पहले प्राइस एक्शन देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ सपोर्ट लाइन. ओके, yes, so you can see these candles, these two candles. यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस केम डाउन, वेट अ मिनट, यस, द प्राइस इधर से प्राइस नीचे आ रहा है, ऑफ कोर्स सेम एक ही लाइन में नहीं आएगा, पुल बैक आएगा देन इट विल कम डाउन, पुल बैक देन इट विल कम डाउन. ओके, just see the market, and here you can see a bullish engulfing candle. Yes, star भी बताऊंगा, don't worry. So you here you can see bullish engulfing pattern. From this point the price went up till where, till here it went. Stop loss क्या होगा हमारा, ये वाला पार्ट, stop loss hit हुआ यहाँ पे नहीं, again same, here you can add more quantity. Okay, so yes, अब यहाँ पे आपको bearish में बताता हूँ. Okay, so let me delete this, and यहाँ पे which candlestick pattern is this guys? Wait a minute. Yes, ये तीन कैंडल जो बनाया हूँ मैं, what pattern is this? Please let me know. Come on guys, सबके response चाहिए मुझे. Evening, चलो very good. Why evening? Yes, because okay, I think yes, यहाँ पे एक resistance भी है, you can find this resistance. चलो यहाँ पे एक resistance assume करते हैं. Yes, this is a evening star. And what's this? What's this? Come on guys, type fast. Engulfing. Which engulfing? Yes, bearish engulfing. Very good. And और example देखते हैं कहाँ पे, चलो पहले support resistance ढूंढते हैं. देखो प्राइस एग्जैक्टली आपको बताएगा नहीं, इट विल हैव नॉइज. कैंडलस्टिक में बहुत सारा नॉइज होगा रियल चार्ट में. ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल 4 कैंडल के बाद नहीं, आप जितना देखोगे प्राइस एक्शन, जितना आप लाइव मार्केट देखोगे उतना आपको समझ में आएगा. ठीक है, एंड यस, दिस विच कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस? आई एम कंसिडरिंग 4, तो 3 भी करते चलेगा. यस, सपोर्ट लाइन कैसे समझ में आती है, मैं आप वीडियो भेजूंगा आपको तो आपको समझ में आएगा सपोर्ट लाइन. यस, अब यहाँ पे यू गाइस आर सेइंग कि सर 3 कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे 4 कैंडल्स है, लेकिन ये रियल मार्केट है राइट. यहाँ पे 100% श्योरिटी कभी नहीं मिलेगी अपने को. वी जस्ट हैव टू एडजस्ट. आई हैव सम एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये पैटर्न देख के आई विल शॉर्ट द मार्केट बिकॉज इट्स अ रेसिस्टेंस.
यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस. अगर मैं लाइव मार्केट में ये पैटर्न बनता हुआ देख लेता, दिस इज अ रिजेक्शन. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की रेस्पेक्ट हो रही है. सो आफ्टर सीइंग दिस कैंडल, दोज हु बाइड एट दिस पॉइंट विल गेट अ प्रॉफिट, they will start booking it. And this is a resistance, right? If you find a red candle, the short sellers will come. Okay, the price is getting rejected, I will take a target of this. So they will also short the market. And this is how the time frame this is how the candlestick, the price action behaves, and it will come down. So the time frame, any time frame, it will work. Any time frame, Prasad. Yes. One more thing we will see. Okay, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बुलिश एनगल्फिंग है. दिस पार्ट, यस, कितना अच्छा है यहाँ पे. लाइक आफ्टर दिस द प्राइस वेंट अप, राइट? यस. सो आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? व्हाट यू हैव टू डू फॉर ट्रेडिंग? जस्ट फाइंड, वेट अ मिनट, जस्ट फाइंड अ गुड सपोर्ट और रेसिस्टेंस. यहाँ पे यू फाइंड बेरिश एनगल्फिंग और इवनिंग स्टार पैटर्न. यहाँ पे यू फाइंड bullish engulfing or morning star pattern. Trade on the stop loss of the high of the candle and here low of the candle. That's it. The trading is done. I have showed you the simplest strategy to trade. Okay, this is a strategy, guys, don't worry. yes, ये एक strategy बताया हूँ आपको कि how to trade. अब support resistance कैसे ढूंढना है, you have to watch my previous video. And yes, that's it. So we have only 1 minute left. I will reschedule this again. yes, ये back testing ही तो हो रहा है ना प्रसाद. यहाँ पे कौन सा पैटर्न है? दिस पैटर्न. मॉर्निंग स्टार. यस, बट यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है. नहीं, यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है सपोर्ट का. सो वी नीड दिस एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ही हम ट्रेड लेंगे. यहाँ पे मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा. आई नीड प्राइस एट दिस पॉइंट. यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट दिख रहा है मुझे लाइक दिस, आई विल ट्रेड. यस. ओके, सो और एक रेसिस्टेंस ढूंढते हैं अच्छा सा. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ गुड रेसिस्टेंस. यस. Okay, the session can end anytime. I will be sharing your recording. Wait, I'm again sharing with the webinar link, guys. Join again, ठीक है?